Hello everyone, so today we will be studying about chronic cholecystitis and its identifying features during histological examination. The most important features includes mucosal changes in which the superficial epithelium will be eroded and it will invaginate the muscular layer forming Rokitansky-Escoff sinuses which will be retained in chronic cholecystitis. Inflammatory infiltrate, obviously in chronic inflammation there are lymphocytes and plasma cells associated with fibrosis in this case, and smooth muscle cells ka hyperproliferation will be there and macrophages, foamy macrophages will be present. So this is how a slide of chronic cholecystitis will look like. There are total 4 layers. The innermost is mucosa, then submucosa, muscularis layer and the serosal layer. अब यहाँ पे हमें mucosal layer में hemorrhage देखने को मिलती है. सब mucosal layer comparatively normal होती है, लेकिन जब हम muscularis layer देखते हैं तो muscularis layer में जो smooth muscle cells होते हैं उनकी hyper proliferation, hyperplasia हो रखा होता है, which we can appreciate. See, I have marked that the dark pinkish color discoloration or substance that you can see, that is the hyperplasia of the smooth muscle cells in the muscular layer. And in the serosal layer, you can see that there is fiber production. Fibrosis is there, which is associated with chronic irritation, and cholesterol deposition is also. In this slide, we can appreciate the superficial epithelial layer, which is eroded. And we can see inner to the epithelial layer, there is dark pinkish color, comparatively dark pink in color as compared to the superficial epithelial layer. We can see that is the muscular layer, and we can see smooth muscle cells ka hyperplasia ho rakha, we can see that. And you can see that I have marked something is retained Rokitansky-Escoff sinuses. What is that? जो सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर है वो मस्कुलर लेयर में पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में अंदर जाके इन्वेजिनेट करती है एंड इट फॉर्म्स Rokitansky-Escoff sinuses. Okay, they are retained in chronic cholecystitis. So in this slide I have focused on the Rokitansky sinuses. हम देख सकते हैं कि इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड पे इन द लोअर कॉर्नर देयर इज स्मूथ मसल सेल्स का हाइपरप्लेसिया. उसके बाद Rokitansky साइनस देख रहे हैं विच वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर प्रीवियस स्लाइड कि इट इज़ फॉर्म्ड बाय द हर्निएशन एंड इन्वेजिनेशन ऑफ द सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर इन द पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू. सो यहाँ पे हमें जो ये Rokitansky साइनस देख रहे हो आप, इसकी जो बाउंड्रीज है वहाँ पे कोने में मतलब एजेस पे हमें पर्पल जो डिस्कलरेशन जो डॉट दिख रहा है, दैट इज़ द न्यूक्लियस विच इज़ ओवल अराउंड इन दिस केस. And there is no atypical cellular features associated with this sinus, and smooth muscle cells also you can see. In this slide you can clearly see that there is no cellular atypia in the cells of the Rokitansky sinuses. That is मतलब बेसिकली Rokitansky sinus बन कैसे रहा है कि सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर ने इन्वेजिनेट करा पेरीमस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू में और ये बन गया. तो बेसिकली वही सेल्स है, लेकिन ये थोड़े मॉडिफाई हो गए हैं और इनका न्यूक्लियस इज राउंड टू ओवल एंड इसका साइटोप्लाज्म इज ग्रैन्युलर एंड वैक्यूल्स आर देयर एंड एपिकल साइड पे म्यूसिन इज देयर. You can clearly appreciate that. In this slide we can clearly see two things. One is the macrophages, second is the cholesterol. तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल है कैसा? निडल लाइक कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स आर देयर, जो कि बहुत सारे हैं. वी कैन क्लियरली अप्रिशिएट दैट. एंड उनके बीच में हमें जो सेल्स दिख रहे हैं दैट आर मैक्रोफेजेस. अब मैक्रोफेजेस का काम इंजेक्शन करना होता है. मैक्रोफेजेस आए, इन्होंने कोलेस्ट्रॉल को इंजेस्ट करा. कोलेस्ट्रॉल इज फैट, सो मैक्रोफेजेस विल लुक लाइक येलोइश इन कलर. So because of that they will resemble seeds, the yellow seeds on the strawberry. So it is also known as strawberry gallbladder. So this is the most important identifying feature in chronic cholecystitis. So as it is a chronic inflammation, two cells will be there, that is plasma cells will be there and lymphocytes will be there. अब plasma cells and lymphocytes हम देख के easily बता सकते हैं कि मतलब which one is plasma cell, which one is lymphocyte, but still you have to know the identifying features which I have written on both the sides. You can see that plasma cells are larger, lymphocytes are smaller. So this is the diagram that you guys have to draw in your exam, and that's all for today. Thank you so much guys, and in case you have any doubts then comment below. Thank you.